I want to show you those final moments of that Air India flight AI-171, Boeing 787-8 Dreamliner. This was a flight from Ahmedabad to London Gatwick. 13:39 hours it took off. That's the scheduled departure time. 13:45 hours. Barely 5 minutes after that aircraft took off. You watch those images. It takes off and suddenly it stalls and then plunges to the ground into a huge ball of orange fire. This happened in the Meghani Nagar area of Ahmedabad. The crash from 625 feet. Like we told you, 230 passengers, 10 crew, 2 pilots, a total of 242 on board, 53 British nationals, 169 Indian nationals, 1 Canadian, 7 Portuguese. Former Chief Minister of Gujarat, Vijay Rupani, was on board. The plane was being piloted by Captain Sumit Sabharwal, the captain with 8,200 hours of flying experience. The first officer, Clive Kundar, 1,100 hours of experience, took off from runway 23, and moments after takeoff, it gave a mayday call, one mayday call, and that is an emergency. The pilot, the moment he announces mayday, mayday, that means all help needs to be provided to the aircraft, but there was hardly any time, just 625 feet. The aircraft had taken off, barely crossed the perimeter of the runway, of the airport, and then just came crashing down. Now imagine this was a flight which was to fly to London Gatwick Airport, full of fuel for that 9-hour-long flight. Ambient temperature was high today, full fuel, and it crashed. And that's why that huge ball of fire that you see on your television screen. I'll tell you much more about this. No response when the call was made by the ATC. Union Home Minister Amit Shah is heading to this area. The Ahmedabad airport has been shut down for all flights because now there will be a detailed investigation. Do keep in mind, this is the first ever crash and a hull loss of a Boeing 787-8 series. Now, a Boeing 787 is a Dreamliner aircraft. Remember those aircraft with the bigger windows, ambient lighting? It started flying 2011 onwards. December 15, 2009 was the first flight. Big story. Home Minister Amit Shah rushes to Ahmedabad. Now, this aircraft is being flown, the Boeing 787-8, by British Airways, American Airlines, Japan Airlines, Qatar, Air India, several flights. The first statement of Keir Starmer, the British Prime Minister, it's just come out and I want to read out to you. The scenes emerging from a London-bound plane carrying many British nationals crashing in the Indian city of Ahmedabad are devastating. I am being kept updated as the situation develops, and my thoughts are with the passengers and their families at this deeply distressing time. And it is deeply distressing. We urge viewer discretion. Some of the images are very, very disturbing. We're taking great care to ensure that we are able to sift through those images, but some as they come in, because the aircraft, when then crashed and landed on a building, there have been casualties. There are efforts being made to rush all the injured to the hospital, but do keep in mind a plane that was full of passengers, 242, and that is the capacity of this variant of the Boeing 787-8 Dreamliner, powered by 2 Rolls-Royce Trent 1000 the engines that power the Rolls-Royce engines. I want to quickly cut across to our reporters who are joining us from Ground Zero. We bring you this report. ये प्लेन था और लंदन के लगभग 240 मुसाफिर इसमें शामिल थे, और आप देख पा रहे हैं जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं, प्लेन जब क्रैश हुआ तो प्लेन के जो भी अलग अलग हिस्से हैं वो यहाँ पर टूट के गिरे हुए हैं, और लगातार यहाँ पे एम्बुलेंस की जो सायरन है वो सुनाई दे रही है। कोशिश यही की जा रही है कि जितनी जल्द लोगों का रेस्क्यू हो पाए और लोगों को अस्पताल पहुँचाया जा सके। लोगों की जो सुरक्षा है उसे प्राथमिकता दी जा रही है। यहाँ पे BSF समेत SDRF, NDRF और
एयरफोर्स की जो टुकड़ियां हैं उसे यहाँ पे भेज दिया गया है, कमांडो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं और खास करके प्राथमिकता यही है कि तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से चलाया जा सके। और किस प्रकार का ये बेहद ही डरावना हादसा है, अगर उसके ऊपर भी नजर करें तो ये जो बिल्डिंग है जो कि मेघानी नगर इलाके में आई है और एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे की तरफ का हिस्सा है, आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, अभी भी जो आग है वो आग दिखाई पड़ रही है बिल्डिंग के ऊपर की तरफ। और यहीं पे वो प्लेन जो है वो जाके सबसे पहले वो टकराया और टकराने के बाद जो पेड़ है वो आप समझ सकते हैं तस्वीरों में देख के, प्लेन के जो पेड़ है उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो टूटते हुए जो प्लेन है वो आगे जाके गिरा हुआ है। जहां फिलहाल आप तस्वीरों में जो भीड़ देख पा रहे हैं ये वही जगह है जहां पे प्लेन जो है वो जाकर क्रैश हो गया। गनीमत यही है कि सीधे तौर पर प्लेन बिल्डिंग में नहीं टकराया, लेकिन प्लेन का जो बाहरी तरफ का जो बाहरी हिस्सा होता है, जो उसके टायर के तरफ की जो उसके विंग्स होते हैं वो यहाँ पे जो बिल्डिंग है उस पे जाके टकराई। और बिल्डिंग के ऊपर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, चौथा मंजिला इमारत का जो कि डैमेज हो चुका है, यानी कि स्पष्ट तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि प्लेन किस तरह से यहाँ पे आके टकराया। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं एनएसजी जो कमांडोज हैं वो कमांडो भी यहाँ पे तत्काल प्रभाव से भेज दिए गए हैं। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर और अहमदाबाद सिविल अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो नर्सिंग कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोग यहाँ पे घायल हुए हैं प्लेन क्रैश में उनको तत्काल यहाँ से रेस्क्यू किया जाए और 200 मीटर की दूरी पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल जो कि एशिया की सबसे बड़ी अस्पताल है वहाँ ले जाकर उनको सुरक्षित उनका इलाज शुरू कर दिया जाए। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी।